Muhurta Matrimony. No registration charges and no premium packages. Select profiles you like and just pay 25 rupees per profile. Download Muhurta Matrimony from the Play Store. It was in the year 1959 that an uprising erupted in Lhasa in Tibet against the Chinese rule. The 14th Dalai Lama fled to India, and along with him followed at least 1 lakh Tibetan refugees. 6 decades have passed. What has changed for the Tibetan refugees living in India, especially most of them who have never seen Tibet, and the younger generation born and brought up in India? What are the issues that they are facing here in India? The Tibetan market in Dehradun is a famous spot for all the shopping lovers looking for the latest trends at a reasonable price. Young Tibetan refugees working at the shops is a common sight. जन्म तो यही हुआ, ये भी हमारे देश ही है, मगर तिब्बत ऐसा हरियाली होगा ऐसा बस पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं. Very few Tibetans living in India opt for a citizenship to keep the cause of Tibet alive. They are considered one of the most successful refugee communities across the world. But despite a good degree, finding a job in accordance with their qualifications and skills without the Indian citizenship is next to impossible for these young Tibetan refugees. इंटरमीडिएट यहीं से किया, कॉलेज यहीं से हुआ है, मगर जॉब मतलब जैसे चाहते हैं, जैसे सैलरी हम चाहते हैं तो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है. मैंने भी M.Com किया है तो उस फिर बेटर इनकम नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिर शॉप में. 58-year-old Pema Kelek came to India from Bhutan in 1980. He chose to remain a refugee, but now, after living in India for over 40 years, it hurts him. अभी हमको इंडिया का सिटीजन का थोड़ा महसूस होता है, क्योंकि हमने कहीं कुछ ज़मीन खरीदना है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ भी हो तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि हमारे पास सिटीजन नहीं है. These refugees live together in settlements managed by the Tibetan government in exile. They have their monasteries, schools, offices, playgrounds and a few shops inside. The Tikling settlement in Dehradun is home to around 450 Tibetan families. There are 5 main settlements in the city. To generate a source of employment, they make incense sticks, Tibetan traditional wear, handicrafts and run small businesses across the country. Year-old Tenzin Wangmo travels to the Indian state of Gujarat every year to sell clothes, but couldn't travel this year due to COVID. She has set up a small stall within the settlement. If we are looking for a job in India, we need an Indian citizenship. Now we are Tibetan and we don't have this now. We are only Aadhaar card, RC and Green Book only. So this is very difficult for us. And in Tibet, in India, our Tibetan colonies are very few colonies spreading over the India. So lots of people from Tibet are also coming to India, and many young generation are still in India, and we are sometimes suffering a job to get. A few Tibetan people can job within the Indian Tibetan community. So other Tibetan students are facing to get job in India. According to the second Tibetan Demographic Survey, over 17% of the total workforce population is unemployed or underemployed. The demographic survey shows exodus of the Tibetan refugees to the west. Tenzin's younger brother has moved to France. कुछ सालों से कुछ ऐसा ट्रेंड रहा कि ज़्यादातर वहीं जाने की कोशिश करते हैं. एक मेन चीज़ तो ये है कि वहाँ पर एक तो सीधी बात में तो सबसे पहले तो लिविंग्स के लिए जो आमदनी यहाँ नहीं कमा पाते हैं, वो वहाँ से कमा के यहाँ पर जो भी उनके परिवार लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारी मदद हो जाती है. और दूसरी एक बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ओपनली प्रोटेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं. जो हमारे कल्चर वगैरह जो सेपरेशन जो चाइना कर रहा है उसके लिए भी वहाँ से बहुत सारे ऐसे 50 ग्रुप्स वगैरह हैं जो वहाँ पर ओपनली
प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हर तरह के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, सभी से अलाउंस लेना पड़ता है। Priorities have shifted over 6 decades. Struggles and aspirations have evolved. मेन रीज़न तो ये है कि माइंड गैप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले यहाँ पर जो जैसे हमारे माता पिता जो लोग यहाँ आए थे, उनके मन में तो यही था कि हम कल ही वापस जाएंगे। अब अभी इतना लंबा मतलब करीबन 70 साल करीबन हो गए, तो उसमें ऐसा है कि अभी सभी को एक डर सा सता रहा है कि अब वापस जाने को तो नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे और जो फैमिली के जो अभी क्या बोलेंगे जो इनकम वगैरह भी, उनमें ख़ास तौर पे सभी का ध्यान अभी उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे टिबेटन कॉज के लिए थोड़ा सा लैक ऑफ अटेंशन ज़रूर हो रहा है। While the older Tibetan refugees who came to India decided not to take up the Indian citizenship to keep the fight for Tibet alive, it has become a major issue for the young, educated Tibetan refugees living in India to find a suitable job, and they're forced to do petty jobs. The challenge is how to pass on the spirit of the fight for Tibet onto the younger generations with a palpable shift in focus. Anubhuti Gaur for One India English.